बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। टेंसेस पार्ट 1। टेंसेस पार्ट 1 में मैं पूरे 12 टेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। नॉर्मली जो हमें क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं, टेंसेस पढ़ाए नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते, रटवाए जाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं, इसके बाद भी टीचर्स तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। टेंसेस 12 के 12 टेंसेस हमें आते हैं जी, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ राइटिंग ए सिंगल सेंटेंस, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ स्पीकिंग ए सिंगल सेंटेंस। मतलब टेंसेस सीखने के बाद उनके जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके बाद दे आर नॉट एबल टू राइट और स्पीक ए सिंगल सेंटेंस। तो फिर आपने कहाँ सीखे, कैसे सीखे? फिर जब हम जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो वो खुद उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल 0 होता है। तो जिसको टेंसेस आते हैं उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लिखना, एसे लिखना, एप्लीकेशन लिखना, स्टोरी लिखना, बोलना, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से टेंसेस सीखने चाहिए उस तरह से टेंसेस सीखे नहीं जाते। तो ये मैं टेंसेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, आज उसका पार्ट 1। तो अगर आपने टेंसेस सीखने हैं, जो मॉडर्न अप्रोच है, टेंसेस सीखने के बाद, सिंपल एक टेंस सीखने के बाद यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश। तो जब भी हम कोई टेंस सीखते हैं, टेंसेस का जो प्रॉपर तरीका है उसमें सबसे पहले आपको टेंस का स्ट्रक्चर सीखना है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। उसके बाद टेंस की इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंस में उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे आमतौर पे ट्रेडिशनल स्टाइल में बताया जाता है कि उर्दू की मदद से कि आखिर में ताते ते आते हैं, चुका है, चुके। तो ये बड़ा बोगस कॉन्सेप्ट है, इससे आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। यू कैन नेवर बी एबल टू राइट और स्पीक इंग्लिश। अगर आप इसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जाएंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, इंग्लिश नहीं सीख सकते। मैं तो कहता हूँ कि 2 टेंसेस सीखने के बाद आप ठीक ठाक इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको उस स्टाइल से, उस मॉडर्न मेथडोलॉजी से, मॉडर्न अप्रोच के साथ अगर आपने इंग्लिश सीखें तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे से लेकर टीचर्स तक, ये मेरे टेंसेस की सीरीज सब के लिए बिल्कुल ईजी अप्रोच। फर्स्ट यू विल लर्न द स्ट्रक्चर। उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। आपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे करना है। आपने किसी भी टेंस में बात करनी है, किसी भी टेंस में आपने लिखना है, तो उस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है फर्स्ट। उसके बाद अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है इंग्लिश में, सेंस क्या है, उस टेंस का सेंस क्या है। दूसरा पार्ट होगा सेंस ऑफ द टेंसेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंसेस। देन तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि उस पार्ट में जाके आप लिखना और बोलना सीखेंगे, वो होगा एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ द टेंसेस। तो आज पार्ट 1 टेंसेस का, जिसमें मैं पूरे 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में, टेंसेस पार्ट 2 में, मैं पूरे 12 टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई, सेंस डिस्कस करूँगा। और तीसरा पार्ट, टेंसेस पार्ट 3 जो होगा, हो सकता है उसके आगे सब पार्ट्स भी हों, उसमें मैं यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ द टेंसेस। इस तरीके से जब आप टेंसेस सीखेंगे, दैट्स माय गारंटी, यू वुड बी एबल टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश। जहाँ तक आप जाएँ, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएँ, आप इंटरव्यूज़ में जाएँ, आप CSS में जाएँ, आपको लिखना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी प्रेसी राइटिंग है, आपने एसे लिखना है, आपने स्टोरी लिखना है, कोई मसला ही नहीं होगा अगर आप इस तरीके से, इस प्रॉपर तरीके से आप टेंसेस को सीखेंगे। जो पुराना एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, वो टेंसेस हमें पढ़ाए जाते हैं, बोर्ड पर लिखा, कॉपी पर नोट कर लिया, नो लर्निंग, नो कॉन्सेप्ट, उस स्टाइल से रिजल्ट आपके सामने कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं, इवन ग्रेजुएट्स होते हैं, इवन मास्टर इंग्लिश में किए होते हैं, बट दे कॉन्ट स्पीक, बट दे कॉन्ट राइट, सिंपल एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो व्हाट इज द रीज़न? तो रीज़न इज़ दिस दैट कि उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं सीखा, सेंस नहीं सीखा, आइडेंटिफिकेशन का कोई पता नहीं है, एप्लीकेशन नहीं पता, हाउ टू यू विल अप्लाई, हाउ विल यू अप्लाई अ टेंस इन योर कन्वर्सेशन, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, हाउ विल यू राइट इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो सिंपल टेंसेस से आप यू कैन स्पीक लॉट्स ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा बाकी बहुत सारे सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, वो बात की बात है। लेकिन मेरे ये दावा होता है मेरे सेशंस में, क्लासेस में, कि यू कैन स्पीक इंग्लिश जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पता है, उसका सेंस आइडेंटिफिकेशन पता है और उसकी एप्लीकेशन पता है,
बहुत सारी ऐसी उसके यूजेस हैं हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कि आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यू कैन स्पीक इंग्लिश. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. You have to be very much careful. तीनों पार्ट्स, टेंसेस पार्ट 1, टेंसेस पार्ट 2, टेंसेस पार्ट 3, आपने तीनों पार्ट्स देखने, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. बिल्कुल छोटे बच्चों से प्रेप नर्सरी वंस के बच्चों से लेकर CSS के एग्ज़ाम देने वालों तक दिस इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेरा ये टेंसेस का सेशन. आप मेरी गारंटी है कि यू विल लर्न. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टेंसेस पार्ट 1, जिसमें मैं आज पूरे 12 टेंसेस का स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या है ये मैं स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस लें, जनरली देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. I have discussed these 4 components in detail in spoken English part 1. उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में भी आ जाएगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको आप दोबारा देख लें. व्हाट इज सब्जेक्ट? डूर ऑफ एन एक्शन, नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं पूरे 12 टेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पे. हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ हेल्पिंग वर्ब: डू, बी एंड हैव. डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, सिंपल प्राइमरी एक्सिलरीज. देन मेन वर्ब, एक्शन वर्ब मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो. देन ऑब्जेक्ट. तो 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं: हेल्पिंग वर्ब, समटाइम डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और फॉर्म ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट रिमेन्स ओवर हियर ऑल द टाइम एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स ओवर हियर ऑल द टाइम. दे can't change. You can't change the subject and object, their positions. Only 2 things are changed: फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. यही 2 चीज़ें आपने देखनी है और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल प्रेजेंट टेंस. And one thing more that we have to say a sentence in 3 different forms: affirmative, negative and interrogative. Affirmative, positive, negative when you negate something, and this is the general formula of the formation of negative sentence. You put not after the helping verb. Whenever we form a negative sentence in these simple tenses, we put not after the helping verb. And then whenever we form an interrogative sentences, we put the helping verb of that particular tense in the beginning. हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाने से इंटरोगेटिव बनता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस और ट्रेडिशनली वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उसका स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज जस्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ही, शी एंड इट, I have discussed pronoun in detail. Or singular noun, we use S or ES with V1. The simple structure of simple present tense is affirmative, subject plus first form of the verb. There are 4 forms which are normally used: V1, V2, V3 and V4. Present, past, past participle and present participle. Go, went, gone and going. I have discussed this in the video about verbs. Then negative. I have told you that we form negative by putting the helping verb in the beginning. Subject plus do, does plus not plus V1 plus object. This is negative of simple present tense. Then interrogative, we put the helping verb of that particular tense in the beginning. Do, does at the beginning, then subject, then plus V1 plus object. So this is the structure of simple present tense, right? Affirmative, negative and interrogative. Subject plus V1 plus object. In case of third person singular pronoun, he, she, it, name of any person or singular noun, we add S or ES with V1. Then negative, subject plus do, does plus not plus V1 plus object. Then interrogative, do, does at the beginning, then subject plus V1 plus object, right? This is simple present tense. Now come to simple past tense. The next, again affirmative, subject plus V2 plus object. Very simple. Whenever we form a sentence in simple past tense, the structure is, we will discuss identification, the sense, then everything would be clear. First of all, at present, at the moment, you have to just keep in mind the structure, the basic structure. Subject plus V2 plus object. First subject plus second form of the verb and object. Then negative, I have told you that you have to put not after the helping verb. Subject plus did plus not, and now V1. V2 is changed to V1.
subject plus did plus not plus V1 plus object. Right? Then interrogative. What are you supposed to do? You have to put helping verb in the beginning. Did plus subject plus V1 plus object. This is very simple structure of simple past tense. Then future indefinite. The next one. Subject. Basic components are there. Subject, helping verb, main verb and object. उनकी सीक्वेंस हमने चेंज नहीं की. I have told you that helping verb चेंज होते रहेंगे और वर्ब की फॉर्म बस. Affirmatives of future indefinite tense. Subject plus will plus V1 plus object. Subject, will or sometimes shall, first form of the verb and object. And negative, it's very simple, you have to put not after the helping verb. Subject plus will plus not plus V1 plus object. And then interrogative, will plus subject plus V1 plus object. This is future indefinite tense, affirmative, negative and interrogative. Right? I will give examples for all. At the moment I am just discussing structures. Then the next one is past present continuous tense. Continuous tenses. One thing is common in all the continuous tenses, that is fourth form of the verb. Present participle, V1 plus ing. Okay. Affirmative of present continuous tense. Subject plus is MR plus V1 plus ing plus object. Whenever we form a sentence in present continuous tense, we have to put is MR, then fourth form of the verb, or we can say present participle or V1 plus ing form of the verb. Then whenever we form negative, it's quite simple. Subject plus is MR plus not plus V1 plus ing plus object. We have to put not after the helping verb. Then interrogative of present continuous tense, is MR at the beginning, subject plus V1 plus ing plus object. I hope now the structure is, you are following the structure. How do I form the structure? Then past continuous tense, I have told you that one thing is common in all the continuous tenses, that is V1 plus ing. Only the helping verbs keep on changing. Helping verb change होते रहेंगे और verb की form जो है वो वही रहेगी, सिर्फ verb की form change होती रहेगी. The next one is past continuous tense. Subject plus was verb plus V1 plus ing plus object. Only helping verb change हुए, वही fourth form of the verb. In all the continuous tenses, we use fourth form, ing form. Subject plus was verb plus ing plus object. And when we form negative, we put not after the helping verb again. Subject plus was verb plus not plus V1 plus ing. Then the next one is interrogative of past continuous tense. Was verb at the beginning, subject plus V1 plus ing plus object. Right? Then the next one is future continuous tense. Subject plus will plus be. The helping verbs in this tense are will be. Will be plus V1 plus ing. V1 plus ing is the same. V1 plus ing plus object. Right? And when we form negative, we put not after the first helping verb, after will. Subject plus will plus not plus be plus V1 plus ing plus object. Not be. I will not be doing this. Then interrogative, will at the beginning, will plus subject plus be plus V1 plus ing plus object. Right? The next is tense number 7, present perfect. And again one thing that you have to keep in your mind, जितने भी perfect tenses हैं उनमें one thing is common. जैसे कि continuous tenses में भी एक चीज़ common थी, V4 ing form. And again in all the perfective aspects, perfect tenses, one thing is common, that is V3. तीनों perfect, present perfect, past perfect and future perfect में एक चीज़ common रहेगी, V3. सिर्फ helping verb चेंज होते रहेंगे. Present में has है, past में had और future में will have. This is very simple. Present perfect. Affirmative is subject plus has have plus V3 plus object. With third person singular pronoun he, she, it, singular noun or name, we use has, helping verb has, otherwise have. Subject plus has have plus V3 plus object.
And again negative is quite simple now. We put not after the helping verb. Subject plus has have plus not plus V3 plus object. Then for the formation of interrogative sentences, we put the helping verb at the beginning. Has have plus subject plus V3 plus object. This is present perfect. Come to past perfect. Only the minor change. At the place of has have, we will use had. Rest of the thing that the same. V3 will remain the same. Past perfect tense. Affirmative, subject plus had plus V3 plus object. And in case of negative, we put not after the had, after the helping verb had, subject plus had plus not plus V3 plus object. And then in case of interrogative, had at the beginning, had plus subject plus V3 plus object. And then future perfect. In future perfect tenses, again, there are two helping verbs, will and have. V3 is there. Subject plus will plus have plus V3 plus object. And in case of negative, we put not after the first helping verb, after will. Subject plus will plus not plus have plus V3 and object. And in case of interrogatives, we put the helping verb, first helping verb at the beginning, will plus subject plus have plus V3 and object. Right? Now, perfect continuous tenses. Present perfect continuous. Again, one thing is common, V1 plus ing, because this is again continuous tenses. For perfective, we use has, have and had, the same has, have in present perfect continuous, had in past perfect continuous, and will have in future perfect continuous. Then the use of been and again V1 plus ing in all the three perfective continuous tenses. The first one is present perfect continuous tense. Affirmative is subject plus has, have been, has or have been plus V1 plus ing plus object. Has been and have been plus V1 plus ing. And in negative, has or have not been. Both has or have, then not, then been, V1 plus ing plus object. In case of interrogative, we put has, have in the beginning, then subject, then plus been, plus V1 plus ing plus object. Have been, have not been, or has plus subject plus been. This is present perfect continuous tense. And then in this tense, there is a slight difference between present continuous and present perfect continuous. I will discuss all these things, the differences, the confusions in identification. In tenses part 2, जब मैं tenses part 2 डिस्कस करूँगा तो कौन से टेंस आपस में कंफ्यूज होते हैं, कौन से टेंसेस का सेंस आपस में बड़े क्लोज है, तो वहाँ पे टेंसेस की जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, उनके कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा टेंसेस के सेंसेस में, आइडेंटिफिकेशन में. यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ. यू हैव टू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर्स. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगेन द सेम थिंग, हैज़ हैव की जगह पे हैड और V1 प्लस ing इज देयर. Subject plus had plus been plus V1 plus ing plus object. Then in case of negative, had not been. Subject plus had plus not plus been plus V1 plus ing and object. In case of interrogative, had plus subject plus been plus V1 plus ing plus object. Had been, had not been, and had plus subject plus been. Right? And the last one is future perfect continuous. Now future and perfect. Will and have. And again been V1 plus ing. Subject plus will have been. Will plus have plus been plus V1 plus ing plus object. In case of negative, we put not after the first helping verb will. Subject plus will plus not plus been. Not plus have plus been plus V1 plus ing plus object. Subject plus will plus have. Will have been, will not have been. And in case of interrogative, will at the beginning, will plus subject plus has have plus been plus V1 plus ing plus object. So these are the structures of all the tenses. You have to practice all the structures because structures are very important. अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आप बस एक बुक पढ़ रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कहाँ यूज़ करना ये बात की बात है. I will discuss in the identification, in the application. आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोरी लिखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि whenever you write a story, you are supposed to use simple past or past continuous tense. अब आपको पता ही नहीं कि simple past और past continuous tense को स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, लिखना कैसे, then you can't write.
तो जब हम उसकी एप्लीकेशन या यूज़र डिस्कस करेंगे इस टेंसेस पार्ट 3 में, ये टेंस है, इस टेंस में आपने फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ ये आपने अपनी रूटीन लाइफ बयान करें, वट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, आप रूटीन लिखें, ये बोलें। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब भी रूटीन लिखी जाती है या रूटीन बोली जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं पता, आप नहीं लिख सकते। मैं आपको बताता हूँ कि आपने फ्यूचर इंटेंशंस बताने हैं कि आप आगे मुस्तकबिल में क्या करेंगे, मुस्तकबिल में क्या बनेंगे, आपके क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसको लिखने के लिए, इसको बोलने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अब आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, आपने कैसे लिखने, देन यू कांट राइट। तो प्रैक्टिकली जब आप मैं टेंसेस पार्ट 3 में एप्लीकेशन में जाऊँगा तो प्रैक्टिकली मैं खुद आपको पहले करके दिखाऊँगा कि ये टेंस यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है। मैं खुद पहले उसकी मदद से इंग्लिश आपको बोल के दिखाऊंगा, देन यू विल स्पीक योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू राइट योर सेल्फ। लेकिन फ़िलहाल टेंसेस पार्ट 1 में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द 12 टेंसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 12 टेंसेस। अपनी कॉपी पे लिखें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं पूरे 12 टेंसेस की जो सेंस है, आइडेंटिफिकेशन है, हम आइडेंटिफाई कैसे करें। उर्दू में एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, वी आर सपोज टू ट्रांसलेट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं कि आखिर में अलिफ आ रहा है, चुका आ रहा है, उससे हट के व्हाट इज़ द सेंस फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द सेंस, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। तो मैं एक डायग्राम के जरिए, एक टाइम लाइन के जरिए आपको हर टेंस का सेंस, हर टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताऊँगा। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ सेंटेंस हो, आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये फ़लाँ टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। स्ट्रक्चर तो आपने सीख लिए, आप ये लिखना कोई मसला ही नहीं है। तीसरी चीज़ फिर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि टेंस मैंने सीख लिया, इसका स्ट्रक्चर सीख लिया, इसका सेंस मुझे पता चल गया, अब मैं इसको अप्लाई कहाँ करूँगा हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, हमारी कम्युनिकेशन में। हाउ कैन आई बी एबल टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस। तो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले आप अगर देखना चाहें तो बाकी वीडियोस, वर्ब्स, वो चीज़ें आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेट फॉर माई द नेक्स्ट वीडियो, सेंस ऑफ द टेंस एंड देन एप्लीकेशन ऑफ द टेंसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।